The vast expanse of pastures spread across 500 acres of land, natural ponds, and 7 shelters for 635 stray cattle may seem nothing short of a blessing for a government-owned cow shelter in the state of Uttar Pradesh. Here, the cattle moo and wag their tails peacefully, making a merry sight as they graze in open pastures of the Madhwaliya village in the low-lying flood-prone region bordering Nepal. Located at just about 8 kilometers from the Indo-Nepal border, the picturesque Nichalal Nagar Panchayat in Maharajganj district of eastern UP boasts of the third largest cow shelter in the state. However, the place also reminds about the suspension of 5 government officials, including the then district magistrate, when over 1,500 cattle here had gone missing, leading to serious allegations against the officials in 2019. Taking lessons from the episode, the administration proposed a cow safari or a Nandi safari here. It was envisaged as a blend of religion and ecotourism, and as a space where people could come and spend time with cows in nature's lap. However, workers here say that the project continues to be only on paper. The Madhwaliya Gau Sadan, which was established under the Gau Sadan Act of 1950, is the state's third largest cow shelter. While the site may seem ideal for a cow sanctuary or a cow safari, a place where visitors could come and spend time with cattle in natural surroundings and have darshan of cows, the project is pending even after 5 years since it was first mooted. Initially, the government was deliberating to start it in 31 districts with cow shelters with over 50 acres of land. But in May this year, 3 districts, including Maharajganj, Jalaun and Shahjahanpur, sent proposals for going ahead with the project. However, the project, which can help achieve Yogi Adityanath government's aim to achieve self-reliance when it comes to cow shelters, is yet to see any movement on the ground. The result? Cow shelters across UP are staring at fund crunch, and the Madhwaliya Gau Sadan has stopped taking intake of stray cattle from neighbouring districts due to lack of funds. As one enters the Gau Sadan premises, the bounties of ample land and natural ponds help one realize why the site is apt for the cow safari project as envisaged. There are 7 sheds for sheltering the cows, of which only 4 are occupied at present. 3 of them, known as Gau Ashrays, have cows from 3 neighbouring villages, Meri, Piparia and Jharwaliya. These Gau Ashrays get Rs 30 per day for the upkeep of a cow, an amount which the shelter manager says is insufficient. However, the main Gau Sadan, which was allotted land in 1970 and took a formal shape in 1997, harbours 131 cattle. It sustains only on the donations received from visitors and NGOs. When the Gau Sadan formally started here in 1997, there were merely 35 cattle, but the numbers swelled gradually, and by 2017, it reached around 400, while around 145 acres of land started being used for planting of fodder. Limping to one of the sheds meant for sheltering injured cattle, a few months old calf makes his presence felt in the Gau Sadan premises. Cattle who reach the Gau Sadan are either injured or abandoned by their owners who don't want to tend to them after they grow old or become infertile. The new entrants are first kept inside a walled boundary for about 15 days as they are unable to adjust in the dietary regime initially. Workers say that the cattle which come from the city area are habituated to eating leftovers in plastic packets and take time to adjust. Gradually, they get accustomed to the freshly grown fodder and are shifted to the Gau Sadan shelter. Ram Kishore, the single guard and one of the 26 Gau Sevaks in the Gau Sadan, says that the shelter is not taking any cattle from other districts, but those from across Maharajganj district reach here. कहाँ से आती है यहाँ पे छुट्टा पशु कहाँ से आ जाते हैं? मतनवा से आ जाती हैं, फरंदा से आ जाती हैं, महाराजगंज से आ जाती हैं। और भी अन्य जिलों से भी आती? अन्य जिलों से नहीं। He says that several times the cattle owners leave them outside the shelter and escape. The new entrants have to be kept in a separate shed first. इनको यहाँ पे पीछे मैं देख रही हूँ कोठी में जो रखा है कोठरी में, वहाँ पे क्या क्यों रखा गया इनको? भागे ना पाओ। All the workers are angry and overworked. One of them, Salim, refuses to talk at first
but later reveals the reason for his anger. 200 रुपया मिलता है, वही 4 महीना दिन हो गया, 4 महीना हो गया तनख्वाह आज तक नहीं मिला। 200 रुपया एक महीने में? एक दिन का 6,000 रुपया महीना। 6,000 का महीना, अगर उसमें 4 दिन ना होगा 4 दिन कट जाएगा। अगर 4 दिन कोई तकलीफ आ गया आदमी को तो वो पैसा 4 दिन कट जाएगा। अगर आप एक दिन छुट्टी लेते हो तो कट जाता है। कितना कटता है? 200 रुपया जो मिलता पर डे वो कट जाता है। डीएम 50 मरतबे कह चुके हैं, सीपीयू 50 मरतबे कह चुके हैं, डीएम कह चुके हैं कि आप कोई आए नहीं है, आप वो करना करो, मना घर चले जाओ, ऐसा बोले हैं। ऐसा बोलते हैं सीपीयू साहब। Workers complain of lack of enough staff to tend to over 600 cattle. अब 2 सुपरवाइजर हैं और सब लोग बांट कर जिसका ड्यूटी जैसे लगाते हैं लगाना उसे सब काम कराना। एक महीने की ड्यूटी? हाँ, 1 महीने की ड्यूटी। क्योंकि गाय चरौने लग जाला 1 महीना के, भूसा डाल लेके, बाजरा कट लेके, गोबरों कर लेके लग जाला ड्यूटी। कितने आदमी यहाँ हैं और कम पड़ रहे हैं? बहुत कम बढ़ा। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? आदमी कम इससे बढ़ा कि मान ली भूसा डालने के बाद तो 4 आदमी भूसा डालेंगे, वो में और वहाँ तक है भूसा डालेंगे, चोकर बरान खरी नमक सब डालेंगे, वो डालेंगे और गोबर करेंगे। मान ली पशु बीमार पड़ गए तो ले आए लाट के उतारे के बाद, और मान ली कहीं 22 को मर गए तो के लाट के मट्टी दिया जरूरी बा, कहाँ करें और उनके बीमार पड़ गए तो रही कोई आदमी। Workers complain that the Gau Sadan does not have stretchers for transporting injured or sick cattle who die while loading them onto the only tractor trolley available. Mortality is high and about 20 cattle die in a month here. Every day, record is maintained about the number of diseased cattle and those reaching the Gau Sadan. बीमार पड़ना ना तो के लादले में मैंने परेशानी होला, यहाँ से एक जगह ले में जैसे दूसरे घर में बना तो वहाँ से ले में यहाँ परेशानी होला, उनके टांग के ले आए पड़ा भंडा पर। Salim says that the only thing that can help bring funds to the Gau Sadan, the cow dung, is lying dumped in the southern premises in several heaps. The vermicompost plant is shut, awaiting a fresh tender. Officials say that the payment for the previous tender is also flowing in slowly. तो टेंडर भी खत्म हो गया, उसका ठेका खत्म हो गया, फिर से टेंडर होगा तब तो फिर आएगा, को बचाव तरफ पड़ा है। Apart from salaries pending for 4 months, workers are unhappy about a minister and forest department indulging in plantations in pastures where they work hard to grow fodder for cattle. पौधे कुछ और भी तरीके के लगाए जा रहे हैं चारागाह की जमीन पर? चारागाह की जमीन पर पौधा लग जा रहा है। कौन लगा रहा है? वन विभाग लगवाया है। वन विभाग लगा, मंत्री लगवाया है वन विभाग। वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि तनख्वाह नहीं समय से मिल रहा है। आपको भी 4 महीने से नहीं मिली? सबको नहीं मिला। Workers say that whenever they raise any issue, seniors tell them that the Gau Sadan does not have enough income. District officials admit that lack of funds is troubling the Gau Sadan and they are dependent on donations at present, and the cow safari project could help it become self-reliant. गौ सदन है वो डोनेशंस और ग्रांट्स पे वर्क करती है, और अगर इस तरीके का प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होगा और इम्प्लीमेंट होगा तो सेल्फ रिलायंट भी होगा। वहाँ पे जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे जो डिस्कशंस हैं उसमें वहाँ जो गोबर है उससे बायोगैस प्लांट लगाने की बात है, या वहाँ जो पॉन्ड्स हैं उसमें वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड वर्क है, वहाँ जो ग्रासलैंड एरिया है वहाँ जो गौचर होता है, जो चारे की चीज़ें होती हैं वो भी डेवलप करने की बात है। तो कई सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होंगी और मुझे लगता है कि एक सेल्फ रिलायंस भी आएगा। However, despite proposals coming in from Maharajganj and other districts as well, the government is yet to move ahead with the project. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ इस तरह की गौशालाएँ हैं, जहाँ लैंड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उनको गौ अभयारण्य की तरह डेवलप करने के लिए प्रपोजल्स सीक किए गए थे, और मुझे लगता है कि अप्रैल के मंथ में इसके लिए गवर्नमेंट ने एक जियो जारी किया था और हम लोगों ने मई के महीने में उसका प्रपोज़ल भेजा है। अभी शासन लेवल पे मुझे लगता है DPR स्टेज में है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह वहाँ बन रहा है,
तो जैसे ही इसके डिटेल्स आगे और शासन के स्तर पे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट भी रोल आउट हो जाएगा। सर, इस प्रोजेक्ट से एक सेल्फ रिलायंस में शायद हेल्प मिल सकती है, जो सरकार की एक एजेंडा पे ऑलरेडी है कि सेल्फ रिलायंट बनाई जाए 5000 से अधिक जो काउ शेल्टर्स अक्रॉस यूपी हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं, शायद काफ़ी समय से इस पर कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या मदद मिल सकती है इससे काउ सफारी प्रोजेक्ट से, गौ सदन जो ऑलरेडी हमारा मौजूद है उससे? देखिए, यहाँ महाराजगंज में एक गौ सदन है जो 1950s का जो हमारा गौ सदन एक्ट है उसके तहत ही वो यहाँ पे स्थापित है। और जो ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, इसमें आप सही कह रहे हैं, सेल्फ रिलायंस भी होना है गौशालाओं के, ताकि यहीं से रेवेन्यू जनरेट हो जिसका उपयोग हम लोग गायों के देखरेख के लिए कर पाएँ। और इसके अलावा एक कनेक्ट क्रिएट करने की भी बात है कि जो आज की लाइफस्टाइल है उसमें लोग किस तरीके से गायों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए भी एक प्रोविज़न होगा। लोग आएँ, देखें किस तरीके से गाय रहती हैं, जो उनका इमोशनल एस्पेक्ट होता है उसको भी लोग समझ सकते हैं। आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल अच्छा प्रोजेक्ट होगा अगर जैसे जल्दी ही हमारा रोल आउट होता है। Despite abundance of natural resources, the Madhwaliya Gau Sadan lacks funds and relies on donations from social groups and visitors. Workers rue that they don't have medical equipment and stretchers for injured cattle, which have to be transported on a tractor trolley, resulting in their deaths at times. Moreover, they lack funds for irrigation of fodder plants as well as for a boundary wall, without which the cattle are rendered vulnerable. Stray cattle flow into the Madhwaliya Gau Sadan on a regular basis, and at times people simply leave their infertile cows outside the Gau Sadan and escape. The problems being faced by the Madhwaliya Gau Sadan are, however, only a reflection of what may be happening across the several cow shelters of UP. The state government has repeatedly stressed that they need to make the over 5,000 cow shelters across UP self-reliant. Officials are of the view that the cow safari or the Nandi Safari project could help achieve that aim. However, they are still waiting for a nod from the state government for the project. In Madhwaliya of Maharajganj, this is Shikha Salaria for ThePrint. For more such videos, subscribe to our YouTube channel and follow our Twitter and Facebook pages.